Assalamualaikum. Welcome to the part 3 of the anti mycobacterial. हम पढ़ रहे थे रिफेम्पसिन को, तो हम बता रहे थे आपको कि जब पेशेंट रिफेम्पसिन यूज करता है तो माइट भी उसकी जो यूरिन और फीसिस है उसका कलर जो है वो पिंक हो जाए। तो पेशेंट को फोरवॉर्न कर दें कि आप ये ड्रग ले रहे हैं तो आपके माइट भी आपकी यूरिन, बॉडी फ्लूइड और स्वेट्स और यूरिन आपका रेड ऑरेंज कलर का हो जाए। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है रिफेम्पसिन के, वो हैं rifampicin are generally well tolerated and they can cause nausea, vomiting and rash. लीवर फेलियर भी ये करवा सकती है। तकरीबन जितनी भी एंटी टीबी ड्रग्स हैं दे कॉज दी डैमेज ऑफ द लीवर and they can cause hepatitis and can be liver failure as very rare by the use of the rifampicin. And जो ओल्डर पेशेंट है या जो पेशेंट अल्कोहलिक भी हैं उनके अंदर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है उनकी लीवर फंक्शन की with the use of the rifampicin. So there is a modest increase in the hepatic dysfunction and the rifampicin co-administration with isoniazid. तो जब combination of the rifampicin and niacin दिया जाएगा तो उनके अंदर hepatic dysfunction के chances जो है वो increase हो जाएंगे. When rifampicin is dosed intermittently, especially with the dosing of the 1.5 milligram greater, a flu-like syndrome भी होगा and patient को fever, chills and the myalgia होगा with some extent, और उसका renal failure, hemolytic shock में भी वो जा सकता है. Isoniazid and rifampicin both have side effect causes hepatitis. Side effects of the drug might be reported in 0.1 to 1% of the patient who are using this drug, and this mostly comes when the user are having high doses of the rifampicin and other mycobacterials. Antimycobacterial. The drug interactions क्या क्या है rifampicin की? Causes rifampicin induce a number of the phase one and rifampicin phase one of the metabolism को induce करता है and cytochrome P50 and the phase two में enzyme it can decrease the half life of the co-administration metabolites like हायर डोजेज ऑफ द को एडमिनिस्टर्ड ड्रग। जो अगर हम इसके साथ कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसकी हम डोज बढ़ा देंगे या हम स्विच कर देंगे उन ड्रग्स को जो कि रिफेम्पिसिन की मेटाबॉलिज्म से इफेक्ट नहीं होते, या हम रिप्लेसमेंट कर देंगे रिफेम्पिसिन को रिफाब्यूटिन के साथ, क्योंकि रिफाब्यूटिन साइटोक्रोम P450 को इफेक्ट नहीं करता। साइटोक्रोम P450 इंड्यूस्ड बाय बेंजोडियाजेपिन, बारबिटूरेट्स एंड रिफेम्पिसिन। सो ये तीनों ड्रग अगर एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो जो दो बाकी ड्रग्स है ना वो तो ऐसे फास्टली मेटाबोलाइज्ड होंगे ना कि पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस्ड करते हैं। अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो ये मेटाबोलाइट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइटोक्रोम P450 इन द लिवर। वारफरीन, क्लोफिब्रेट, मिथाडोन, प्रोप्रानोन, क्विनिडीन, सल्फाइड और डिजिटॉक्सिन, कीटोकोनाजोल, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेडिसलोन एंड इन सब से जो मेटाबॉलिज्म है रिफेम्पिसिन की वो बढ़ जाती है। वारफरिन एंड क्लोबिफेरेट, मिथाडोन, प्रोपाफेनॉल एंड इन सब and the prednisolone, they all will increase their metabolism because of the rifampicin. Then come the rifabutin. रिफेम्पिसिन भी रिफेब्यूटिन की ही क्लास का ड्रग है। इसमें भी जो मिडल आई इन्फ्लेमेशन है वो हो सकती है। डेरिवेटिव ऑफ द रिफेम्पिन is preferred for the TB patient co-infected with the human immunodeficiency HIV who receive protease inhibitors PI or several other non-nucleoid and RTIs inhibitors for the treatment of the HIV. Rifabutin is less potent inducer, approximately 40% of the cytochrome P50, thus lessening the certain drug interactions. इसकी drug interactions भी कम है और ये HIV के patient में भी effective है. And rifabutin have adverse effect similar to the rifabutin, like it is रेड ऑरेंज कलर की म्यूकस हो जाता है, आपकी आईज इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, स्किन हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है एंड न्यूट्रोपीनिया। Then come the rifampicin have activity greater than the rifampicin, and it animals and the vitro studies have shown they have a longer half life than the rifampicin and have a and they have a longer half-life than the rifampin and rifabutin and which permits weekly of the doses. तो जो dose duration होगी वो हमारी कम हो जाएगी. In combination of the isoniazid, rifampicin may be used weekly in the patient with the latent latent TB infections and selected as for the HIV negative patient with minimal pulmonary TB. Isoniazid and ramfit जो होगा रेफापेंटीन जो होगा यूज फॉर द ट्रीटमेंट द लेटेंट टीबी इन prophylaxis of the infection. Then come the rifampicin. There are the 4 R's for the rifampicin.
एक तो ये पहले आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं, दूसरे ये रैम्प फॉर द साइटोक्रोम P50s हैं। रिफेम्पिसिन उनको ये रैम्प करते हैं। रेड बॉडी फ्लूइड्स, यानी हमारे जो बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी म्यूकस है, वो रेड ऑरेंज कलर के हो जाएंगे, रैपिड रेजिस्टेंट, और इनकी जो रेजिस्टेंट होगी वो बहुत फास्टली डेवलप हो जाती है। MOR रिड्यूस ड्रग बाइंडिंग एंड द आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम इनकी की पॉइंट्स की बात करें तो टीबी ड्रग्स जो है वो ब्लड विजन और कलर विजन कॉज करती है, जिसमें इथेम्बुटोल जो ड्रग है वो पुअर विजन करेगी। देन कम्स दी पायरोजिनामाइड। पायरोजिनामाइड जो है इज अ सिंथेटिक ओरली इफेक्टिव ड्रग, short course agent used for the combination with the isoniazid and rifampicin and ethambutol, and the precise mechanism of action is under the pyrazinamide must be enzymatically hydrolyzed and pyrazinamide to pyrazinic acid, and which is the active form of the drug, prodrug, or converted into the acidic environment, and the bactericidal some resistant strain lack the pyrazinamide enzyme. फिर क्या होता है? The pyrazinamide is active against tuberculosis bacteria and the acidic lesions with and in macrophages, and the pH drops in the lesion and cause the TB infections. And उसको kill करता है। The TB drugs distribute throughout the body and penetrate in the CSF. तो जो pyrazinamide होता है may contribute to the liver toxicity. Isoniazid, rifampicin and the pyrazinamide, they all drugs causes the liver toxicity. और इसके अलावा यूरिक एसिड रिटेंशन भी करती है, एंड इज द कॉमन बट रेयरली प्रेसिपिटेटेड गाउटी अटैक है, जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया. Most of the clinical benefits of the pyrazinamide cause early in the treatment, and therefore this drug is usually discontinued after 2 months or the of a 6 months of the regimen. The myrin P जो है वो is the empirical therapy for all the drugs that is used for the treatment of the TB, जिसके अंदर isoniazid, pyrazinamide and ethambutol and rifampicin का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, myrin P. आगे आ जाती है ethambutol. So ethambutol bacteriostatic, and it is a narrow spectra antibiotic and is specifically used for the Mycobacterium. Ethambutol inhibits arabiosenile transferase, an enzyme important for the synthesis of the mycobacterium bacterial cell wall. तो isoniazid और जो ethambutol है वो सेल वॉल सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करता है. Ethambutol is used for the combination of the pyrazinamide, isoniazid and rifampicin पेंडिंग कल्चर एंड सस्पेक्टेबिलिटी डाटा के बाद ये यूज होते हैं. नॉट ethambutol may be discontinued if isolated in combination with the suspectability, the isoniazid, rifampicin and pyrazinamide. So ethambutol is a well distributed throughout the body. Penetration in the CNS fluid भी इसके अंदर minimum है, and it can be used questionably for the treatment of the meningitis. तो इस ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट प्लान फॉर दी टीबी meningitis नहीं है. Both the parent drugs metabolite primarily and excreted in the urine. The most important adverse effect is the optic neuritis. इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है, यानी अगर हम लार्ज टाइम के लिए एथेम्बुटोल यूज करें तो हमारी जो स्किन विजन है, हमारी जो आई विजन है वो कम हो सकती है, डैमेज हो सकती है, विच रिजल्ट इन द डिमिनिश्ड visual acuity and loss of the visibility of the discrimination and the red and green light. And this risk optic neuritis and increase the higher doses and in the patient with the renal impairment. तो जो पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट के हैं उसके अंदर भी जो जितने भी एंटी टीबीएल ड्रग है उनको हम अवॉइड करेंगे. विजुअल एक्टिविटी एंड द कोलर डिस्क्रिमिनेशन शुड बी टेस्टेड एंड प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ द थेरेपी. हमने ये देखनी है कि आया के थेरेपी यूज करने से पहले ही पेशेंट की नजर कमजोर थी या थेरेपी के बाद पेशेंट की नजर कमजोर होना शुरू हुआ. इसके लिए हम जो टेस्ट है फॉर द विजुअल एक्टिविटी वो भी करते रहेंगे. यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इज डिक्रीज बाय ethambutol, and caution should be in the excretion of the patient with the may developed gout. So check out the color of the patient before and after the use of the ethambutol, and keep in view that they can cause the permanent eye vision if they are ignored, and keep on using after the poor vision. And the most commonly recognized toxic effect of the ethambutol is optic neuropathy, which generally considered uncommon and irreversible in medical literature. We described a 43-year-old man
who develop signs and symptoms of the bilateral optic neuropathy during the treatment of ethambutol, तो वो बाद में ट्रीट भी हो गया था, बट उससे पहले कि वो जो है वो परमानेंट डैमेज की तरफ जाए. एंड नाउ use child below the 11 to 13 can cause ototoxicity, उनके कारण डैमेज हो सकते हैं, lead to the permanent hearing loss, contraindicated in the kids. Then comes the some characteristics of the first line therapy. ethambutol की बात करें तो वो optical neuritis with blurred vision and the skin color blindness cause करेगा. कमेंट. इस विजन को रोकने के लिए एस्टैब्लिश बेसलाइन विजुअल एक्विटी एंड कलर विजन एंड मंथली टेस्ट करें. आइसोनियाजिड हेपेटिक एंजाइम एलिवेशन ऑफ द हेपेटाइटिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है. उसके लिए हम बेसलाइन हेपेटिक और रीनल एंजाइम का लेंगे. उसके अलावा हम पेशेंट को एंटीफंगल ड्रग्स नहीं देंगे, और उसके अलावा हम पेशेंट को पायरोजिन फॉलिक एसिड सॉरी विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देंगे. पायराजिनामाइड्स नोजिया, हेपेटाइटिस, हाइपरक्लेमिया, रैश, जॉइंट एंड एक्ने एंड गाउट कोस करवाता है. उसके लिए हम जो यूरिक एसिड है उसकी कल्चरिंग का उसका टेस्ट करते रहेंगे. उसके अलावा हम पेशेंट में जो टीबी स्टैटिक इनसाइड है वो उसको ट्रीट उसको मेजर करेंगे. देन कम द रिफैम्पिसिन. रिफैम्पिसिन जो है वो हेपेटाइटिस, जीआईटी ट्रैक, रैश एंड दी सिंड्रोम कॉज करवाता है. इंटरेक्शन विद सेवरल ड्रग भी करता है ये. तो इस्टेब्लिश बेस सो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसलाइन फॉर द हेपेटिक एंजाइम एंड मेजरमेंट ऑफ द सीबीसी एंड द मेजरमेंट फॉर द सिम्पटोमेटिक जो होगा हम करेंगे फॉर द उसके टीयर कलर. उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि रिफैम्पिसिन से आपके जो टीयर है और जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो रेड पिंक कलर के हो सकते हैं. सो डोंट गेट worried when they observe this thing in them. So then come the alternate second line therapy for the TB. वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइनोग्लाइकोसाइड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, इथियोनामाइड, fluoroquinone and macrolides. The second line treatment for the TB in general, and they are the agent less effective and more toxic than the first line agent. Streptomycin को हम पढ़ते हैं डिटेल में, how it is used against the antimycobacterials. So streptomycin, yeah, uh, streptomycin is a minoglycoside antibiotic, was one of the first line effective agent for the TB, and effect in the 30S component of the ribosome, and its actions appear to be greater against the extracellular organism. Infections due to the streptomycin resistant organism can be treated with the kanamycin and amicacin, and it can cause vertigo, ataxia, nephrotoxicity, and tendinitis. Then comes the paraminocyclic salicylic acid. Paraminocyclic acid या जिसको हम PAS कहते हैं, was another for the original treatment of the TB medication. Minoglycoside is a howler polar can cross the placental cell membrane, and sorry, aminoglycosides are highly polar and can cross the cell membrane, not the placental membrane. Sorry, this was my bad. From the earlier 1950 until well into the 1960, isoniazid, PAS, या para-aminoglycoside, streptomycin have the standard for the 18-month treatment region, while largely replaced by the ethambutol. Drug susceptibility and TB and PAS remain an important component for the मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. तो उसके लिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैरा अमीनोसाइक्लिक एसिड्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं. देन कम्स द कैप्रियोमाइसिन. दिस इज परमानेंट पैरेंटली एडमिनिस्टर्ड. इसके साथ रिफैम्पिसिन ऐड ऑन करते हैं. Administered polypeptide that inhibit the protein synthesis. Capreomycin primarily reserved for the multi-drug resistant TB. Careful monitoring of the necessity for the nephrotoxicity and ototoxicity. क्योंकि तमाम एंटी जो टीबी ड्रग्स हैं वो नेफ्रो एंड ऑटोटॉक्सिसिटी कानों और किडनी को डैमेज करते हैं. Then comes the cycloserine. This is the orally effective tuberculosis drugs that disrupt alanine incorporation into the bacterial cell wall. They distribute wall throughout the body fluid, include the CSF. Cycloserine primarily excreted in the change in the urine. Accumulation can occur in the renal insufficiency. Adverse effects involve the CNS and the
CNS damage that can cause anxiety, depression, seizures, and the concentric difficulty, concentration difficulty. Then comes the ethiomide. It is a such structural and analog of the isoniazid in its disruption of the mycoloids and synthesis. The membrane, the mechanism of action is not well identified, but it can overlap with the resistant pattern. Ethanoamide is widely distributed throughout the body and isoniazids. And the CSF, the metabolites extensively in the liver and active inactive metabolites. And adverse effect में इसके nausea, vomiting and hepatotoxicity है. इसके अलावा hypothyroidism, gynecomastia, alopecia, impotence and the CNS effects have been also reported by the use of the ethionamide. फिर आ जाते हैं इसके fluoroquinolones, जिसमें moxifloxacin and levofloxacin have been important for the treatment of the MD or TD and also used for the anti-M. Then come the macrolides, जिसमें clarithromycin, azithromycin आ जाते हैं for the anti-M infection, including the MAC. And azithromycin have preferred with the patient with the greater risk of the interaction. And clarithromycin उनके लिए जिनके अंदर inhibitor of the cytochrome P450 enzyme होते हैं. Then come the bedaquiline. Bedaquiline are the ATP synthase inhibitors in the first line of the drug used in the MD or TD, and the bedaquilines administered orally, and it's active against many types of the bacteria. The bedaquilines may cause QT prolongation and monitoring of the electrocardiogram in recommendation that this agent is CYP3A4 substrate and administration with strong CY3A4 induces rifampicin. So then come the fluoroquinones, aminoglycosides, macrolides, इन सब की एडवर्स इफेक्ट क्या है. फ्लोरोक्विनोन्स जो होता है सीएनएस को डैमेज करता है. एलएफटी इसके अंदर मॉनिटरिंग करनी होती है. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, हेपाटोटॉक्सिसिटी है, और इस ये रीनल और हमारे कान जो है वो डैमेज कर सकता है. मैक्रोलाइट जो होते हैं वो जीआईटी इंटरेक्शन करता है, और ये जो है वो इसके अंदर हम मॉनिटर कर सकते हैं एलएफटीज को. इथियोनामाइड के अंदर हम जो है वो ड्रग एफिकेस देखते हैं हेपाटोटॉक्सिसिटी, और इसके लिए एलएफटी मॉनिटरिंग जरूरी है. पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड या पास जे के लिए मॉनिटर दी एलएफटीज एंड दी इनिमिया या खून की कमी हो सकती है इसमें. साइक्लोसिडीन्स में हम सीएनएस टॉक्सिसिटी देखते हैं कि पेशेंट जो ड्रग्स यूज कर रहा है कि क्या वो उसकी सीएनएस को डैमेज कर रही है या नहीं. देन कम्स द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ दी एंटीबायोटिक्स. ये सारा उन्होंने बताया हुआ है जो पिछली स्लाइड में हमने देखा. देन कम द ड्रग यूज फॉर